Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy. I'm Muhammad Shahid and today we will learn a Chinese sentence. मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और आज हम एक चीनी ज़बान का एक जुमला सीखेंगे, ठीक है, जो कि शायद आपके काम आ सके किसी वक्त जब आप चाइनीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो. So let's proceed and get to know about the sentence. Sentence is 欢迎下次光临，欢迎下次光临，欢迎 welcome you. Okay, now here the person who is addressing the other person is not mentioned here, but he is obvious or she is obvious, so that is why I wrote you in the sentence. So it says, welcome you to honor us. If a group of people are saying this to someone or to other group of people, or if it would be me if a single person is inviting someone to come next time and honor that person or honor that group of people with his or with their presence next time. So I'll tell you how to write it, and I'll tell you how to, the individual meaning of each and every word in this sentence. So welcome you to honor us, me, with your presence next time. 欢迎下次光临，欢迎下次光临。उर्दू में अगर मैं बताऊं आपको तो ये है खुशामदीद कहते हैं आपको अगली दफ़ा आने के लिए, ताकि आपके आने से आप हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्श सकें. मतलब किसी की मौजूदगी आपके लिए बाइस इज़्ज़त हो तो उसको ग्वांगलिन के लफ्ज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ख्वानिंग सियात्स ग्वांगलिन खुशामदीद कहते हैं आपको अगली दफ़ा आने के लिए, ताकि आपकी मौजूदगी से हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई हासिल हो सके, या आप मतलब आपकी मौजूदगी हमारे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बाइस बने. ठीक है, तो वेलकम यू टू ऑनर अस, me with your presence next time. 欢迎下次光临. Now we will try to write it, and I'll tell you the individual meaning of these words. Okay, so the first word which we learn this one. This is 欢迎. So in English we say welcome, and in Urdu it is खुशामदीद. 欢迎. Now 下次 so this means next time. In Urdu we say agli दफ़ा. ठीक है, और जो ग्वांगलिन है, ग्वांगलिन ये वाला लफ्ज़, सॉरी,
तो इसका मतलब है honor someone with your presence. ठीक है. इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शना हम कह सकते हैं. आपकी मौजूदगी की वजह से किसी कोई समझता है कि उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई तो उसको हम ग्वांगलिन कहते हैं. सो ख्वानिंग शात्स ग्वांगलिन, खुशामदीद आपको अगली दफ़ा, ताकि आपके आने से हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिल सके, ठीक है, या हासिल हो सके. सो दिस वाज द sentence for today. I hope you would have learned something new, and I would try to bring different sentences every day, and try to would attempt to write those words in front of you, so you would not only be able to uh, learn how to pronounce it, but you would also learn how to write it, which is very important. So this was um, enough for today, and we'll meet each other in next lecture, and keep supporting Chinese Language Made Easy. Keep subscribing, and stay blessed. Allah Hafiz.